को, जिसे खेल दिया था कवर्स की दिशा में। 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है ऑस्ट्रेलिया का अब 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और शेफाली वर्मा काफ़ी आक्रामकता दिखाती हुई बहुत खुश होंगी अपने आप से कि अंततः उन्होंने कैच पकड़ भी ली, और वो जो कैच उन्होंने छोड़ी थी बहुत महंगी भी नहीं पड़ी। गार्डनर ने इस गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में, बहुत ही हल्के हाथों से खेला था। 1 रन आसानी से मिला और इस तरह से इस 1 रन के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और राधा यादव ने आकर गले लगाया शेफाली वर्मा को कि शुक्र है तुमने कैच पकड़ लिया, वरना ये और महंगा पड़ सकता था। 7.3 की औसत है ऑस्ट्रेलिया की इस समय रन बनाने की। दाएं हाथ से ओवर द विकेट स्नेह राणा, लेनिंग को उनकी ये गेंद कट किया। इस गेंद को क्या ये कैच छूटा है देखना होगा, और गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन की दिशा में। 2 रन निश्चित तौर पर मिलेंगे जब तक कि शेफाली वर्मा उसे फील्ड करके वापस भेजें। एक अच्छा तेज कट था। It was a very good bit of fielding actually. She dived to her left and stopped what was a certain boundary. So we've seen a little bit of pickup in the Indian fielding effort in the last over or so. And that was going for, it was going at the rate of knots down to third man. और इस बार ये गेंद जिसको कि उठाकर खेलना चाहती थी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, पूरी तरह से मिस किया लेनिंग ने। ऋचा घोष ने गेंद को पकड़कर स्टंप किया। पूछा सवाल स्क्वायर लेग अंपायर से, और थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर दिया गया है कि क्या ये स्टंपिंग है या नहीं है। और अगर यहाँ पर ये विकेट भारत को मिलती है तो वाकई ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पारी का। They don't look too happy, the Indian fielders, I can tell you. Richa Ghosh also doesn't look too happy. Maybe there was a fumble, and I think that that's exactly what happened because the bowler just turned and walked back. Well, let's see what happened. She did beat her. The ball went straight through. Yes, in fact, it went through to her elbow, and by the time she was able to bring the ball down, I think Meg Lanning had made her ground, and that's why you can see despondent faces, certainly on Richa Ghosh's face. The ball bounced more than she anticipated, and we're just looking for whether there was anything on the ultra edge, but nothing so far. She did get out of the crease. It was a genuine stumping chance, and you can see over there the ball. Now she's got her bat done just in time before the bails are taken off by. So, to my mind, certainly another chance that's been missed by the Indian fielders. या ये एक रेगुलर स्टंपिंग मौका था। ऋचा घोष उस गेंद के उछाल को समझ नहीं पाई। गेंद आकर उनकी बाजू पर लगी और जब तक उसको कलेक्ट करके वो स्टंप करती। थर्ड अंपायर देख रही हैं कि बैट हवा में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि बैट ज़मीन पर रख दिया था। उतनी चुस्ती से ये स्टंपिंग नहीं की गई थी ऋचा घोष द्वारा कि जिसके लिए उन्हें ये कामयाबी मिलती। और लेनिंग अब सुरक्षित अपनी क्रीज पर। थर्ड अंपायर का इशारा कि लेनिंग नॉट आउट है। 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12.4 ओवर में। स्नेह राणा अपने इस ओवर की चौथी गेंद के साथ दाएं हाथ से ओवर द विकेट। दाएं हाथ की बैटर लेनिंग को, जो कि कप्तान है ऑस्ट्रेलिया की, ये लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर इस गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद इससे पहले कि विकेट कीपर के भी शरीर से लगती है, अंपायर के दोनों हाथ बाहर निकल चुके थे इशारा करने के लिए कि ये गेंद वाइड है। तो एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ ऑस्ट्रेलिया को। Well, I think this just sums it up. I mean, you could see over there, Sarah, she knew that she had fumbled the ball, and she walked right back. It's the second time that Richa Ghosh has missed a chance of Sneh Rana. It was a catch, difficult one, off the outside edge, and this time beating Lanning completely in the air and off the wicket. The ball went straight through to playing for the turn, and missing a stumping chance, a genuine stumping chance. So. Sneh Rana, last ball then coming up of third over. She's been excellent really so far. This time down the track goes Fielder and goes hammered back to Rana, who gets her body in the way, but it ricochets down to where mid-on might have been, and they're finally able to pick up a single. She's given away 19 runs in her third over, in her 3 overs, and had 2 genuine chances missed. 3, in fact, sorry, 3. One at long on, caught, which was the easiest of the 3. A stumping and a catch behind the wicket by Richa Ghosh. Well, India doing themselves no favours. Sanjay Agarwal. 7.23 का औसत है सुनील। 13 ओवर हो चुके हैं। 7 ओवर यानी 42 गेंदें बची हुई हैं, और हम ये मान के चलें कि अगर इन 7 ओवर में भी लगभग 7.5 की औसत से रन बनते हैं तो 50 से ऊपर रन बनेंगे, जो कि 150 के आसपास जाके बनता है। मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि भारत शायद ऑस्ट्रेलिया को 150 के आसपास रोक ले। Well, you are an optimistic man, not with the batting power to follow. I think they'd be looking now with 7 overs to go, at least 10 and over. To my mind, that's what Australia would be looking at. Certainly over 160.
राधा यादव अपने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद के साथ बैकफुट पर जाकर कट किया लैनिंग ने इस गेंद को। गेंद जा रही है स्वीपर कवर की दिशा में, 1 रन मिलेगा। टहलते हुए कदमों से दोनों ही बैटर्स ने 1 रन लिया। इस 1 रन के साथ लैनिंग पहुंची है 11 पर। ऑस्ट्रेलिया 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7.13 की औसत से राधा ने अपने पिछले 2 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट लिया। और स्नेह राणा मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अनलकी रही है इस बार इस गेंद को, जो कि शॉट ऑफ द लेंथ थी, पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में। लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो रेगुलर है, लेकिन भारतीय टीम ने आज जिस तरह की फील्डिंग की है उसमें कहूंगा कि इतनी तेजी से मारे हुए स्ट्रोक को रोक लिया, वो बहुत बड़ी बात है। Cleanly stopped. I think that was the key. जी, और सिर्फ 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है ऑस्ट्रेलिया का 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राधा यादव की एक गेंद बहुत ही धीमी गति की थी और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच कर दिया था। और देखिए फिर से इस बार यहाँ पर ये खराब फील्डिंग, और इस खराब फील्डिंग के कारण जो 1 रन था वो 2 में तब्दील हुए, तो 98 हो गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 13.4 ओवर में। और मुझे लगता है कि भारतीयों द्वारा इन 98 में से कम 10 से 12 रन तो बनाए ही गए हैं। 17 रन बता रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज, जो कि बैठ कर गिन रहे हैं, तो 17 रन खराब फील्डिंग के कारण ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं 98 में से। अगर वो खराब फील्डिंग नहीं हो रही होती तो 81 रन 14वें ओवर में बुरा नहीं था। It was very good. It would be a very good stat for the Indian team, but that's it. As they used to say, great Lala Amarnath, catches win matches. This T20 fielding wins matches. इस बार इस गेंद को, जो कि धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच कर लाती हुई पुल करते हुए खेला मिड विकेट की दिशा में। 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ अब स्कोर हो गया है ऑस्ट्रेलिया का 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद। और रन रेट है 7.07 का, यानी 7 से कम रन गए हैं इस ओवर में। You're an optimistic man, Sanjay Agarwal, and so you should be. But I think I'd look at it a slightly different way. Now, the two fielders have not exactly distinguished themselves today. One has been Richa Ghosh and the other has been Shefali Verma. They're both big hitters. Richa Ghosh, of course, has come to the party. He's helped India win a couple of games. Shefali Verma has not come to the party so far. Well, here's a chance to make up, all that anger that she's got bottled up inside her for the fielding, and she knows that she's misfielded and she's not been up to the mark, to bring it out in the batting and show the world what she can do. This is her opportunity. The next ball of the 15th over has been pulled away from outside the leg stump down to deep backward square. 4 runs then to Meg Lanning as she moves on to 18, and Australia past the 100 mark, 103 for 2, and this is in the 15th over. And India still 1 over behind the scheduled rate. Here goes Rana, and this time the ball comes back into Meg Lanning, who's thinking about cutting but finds the ball coming back into her, then bunts the ball away down to long on and picks up a single. 4-1 in the first 2 deliveries. None for 24. Sneh Rana should have been much better than that. She's bowled much better than those figures show. Gardner now, Ashley Gardner on 3, and she's going to be facing up to Sneh Rana. Richa Ghosh standing up to the stumps. Here goes this one. Down the track goes and straight to, I think that's Jamima Rodriguez, who's fielding extra cover. Excellent fielder. She's been she's a live wire in the field so far, whether she's been fielding deep or within the circle. And in fact, now she's being pushed back to long on with Ashley Garner on strike. They stopped any runs being taken there. It was a dot ball. And because she's showing aggressive intent, this time off the pads down towards long leg, and that's going to be 4 runs. There's no way that's going to be stopped. Moment it's slightly offline. All you have to do is get some bat on it, which is what Ashley Garner did. Her first boundary, and Australia canter on to 108 for 2. जी हाँ, स्नेह राणा के अगर देखें फिगर्स तो एक भी विकेट उनके खाते में नहीं है, जबकि उनकी गेंदबाजी में 3 मौके छोड़े गए हैं, 2 कॉट बिहाइंड की और एक बहुत ही सिंपल सा कैच। तो थोड़ा सा नाजायज़ है उनके लिए कि इतनी मेहनत, इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद रन बनाने की गति भी रोकी। इस बार ये गेंद जो कि टप्पा पड़ने के बाद तेज़ी से स्पिन होकर अंदर की तरफ आई, बल्कि हल्के हाथों से खेला लैनिंग ने, जैसे उसको सहला रही हूँ, और तेज़ी से भागकर 1 रन ले लिया। स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर में। So, as we said, the score predictor 169, Sanjay. That's what I was talking about. Next ball, last ball, and through the fielder there at cover, into the cover boundary. 4 runs once again. He puts a hand on her hips there, Rana, saying,
What do I have to do? It went straight through the fielder at cover within the circle, and it's been a very shoddy display in the field by the Indian team. 113 for 2 should not have been more than, to my mind, 95.